Good afternoon to one and all present here. I, Dr. Anuradha, Coordinator IQAC M.D.S.D Girls College, welcome August gathering on such a beautiful day. I welcome our distinguished speaker of the day, Dr. NAMITA Rajput, Principal. Ma'am, am I audible? Yes, very much. Continue. Okay. Dr. Kiran Angra, Principal, Assessment and Accreditation Ambassador, Paramarsh, various principals of Menti colleges, my friends and colleagues of Menti colleges, NAC coordinator, Mrs. Nishu Bansal, my treasured IQAC team, and other dignitaries present here. Dear friends, we have joined together as a family under Paramarsh scheme of UGC to ponder over the most important feature of NAC, that is best practices. My gratitude goes to Dr. Angra for giving all of us this wonderful opportunity to organize faculty development program, that is institutional values, vision and leadership under the Paramarsh scheme of UGC. Thus, I avail this opportunity to invite my worthy principal, Dr. Angra, to introduce and welcome resource person of the day, Dr. NAMITA Rajput. Over to you, ma'am. Thank you, Anuradha. My dear friends, we met each other at 10 o'clock. An individual webinar which was on gender audit. So from today onward, we are going to start a faculty development program for all the Menti institutions, but I am glad there are people across the country have joined us. Probably the IQAC coordinator has put this poster across the groups pan-India. So dear friends, although I have introduced a learned colleague of us yesterday, but I still feel delighted to introduce Dr. NAMITA Rajput to those who were not present yesterday. She is a scholar par excellence with 23 years of rich expertise in teaching, learning, and research development with a specialization in finance, international business, marketing, and other subjects which are linked with the commerce trade. Dear friends, she has a vast experience of teaching in various colleges of Delhi University in the capacity of lecturer, associate professor. As Anuradha told you, she was a principal in the evening college also, Aurobindo College. She has completed a dozen research projects funded by UGC and similar funding agencies and has guided many MPhil PhD scholars. She has published more than 100 research chapters and edited books, and has authored several books. She has also presented various papers in national and international conferences. She has served as a principal investigator in University of Delhi and UGC. She has been a research associate and a postdoctoral fellow in Department of Financial Studies and Economics and Scientific Research Foundation. Yesterday I also said there are certain unique things which everyone try to do. As far as NAMITA is concerned, she has created a page on Facebook to create awareness on green banking. And her research paper on price discovery is one of the top downloaded papers in the world. She has worked as a content writer in MHRD, UGC projects, e-Pathshala, reviewer in the MHRD UGC projects. She has acclaimed international visibility and has been on the editorial and advisory board of precious international journals. NAMITA also was blessed with various accolades and awards. Indira Gandhi Shiromani Award and Certificate of Excellence by Dr. G.V.G. Krishnamurthy,
shining image of India Gold Medal and Certificate of Excellence. She was awarded Best Citizen of India Award in 2012. So friends, much more than that, which I want to tell about Namita is, she is a lead auditor for Quality Assurance Standards ISO 9001-15, member expert committee UGC Saksham Portshala, Saksham Portal, associate member of IQAC cluster, and as I already told you, she was a former principal of Aurobindo College. It was an evening college when she was principal. So women with such an intellectual background and the vast experience, and friends of us, whenever we have asked her, she always supported us, cooperated us, and she is ready to deliver her intellectual vision whenever, at whatever time we seek. So with such a cooperative colleague of us is today's resource person. Friends, before I request her to come, I have requested Namita only to arrange this faculty program for us. So from today onward till 30th, we will be talking about the various issues which are very important and you feel difficulty while writing your NAC report or AQAR. They are the topics which we'll be taking through the journey of these 5 days will be green audit, academic and administrative audit, human values and ethics, e-waste management. And very important topic, yesterday she talked on gender audit, and today she will be taking us through the best practices, because you will have to understand every time when you put your AQAR on the portal, they ask you the best practices. So what should be the best practices? For that, privileged to honored even to call intellectual and luminary Namita Rajput to this forum. Welcome, Namita. My greetings and salutations to the organizers, and my special thanks to Professor Kiran Angra for calling me on this dais and giving me an opportunity to share my views. So before I start my discourse, I request all the participants to put their microphones on, because there's a constant disturbance last time also, which breaks the the thought process of the speaker. So it's my proud privilege to be here. Now, as you, the accreditation and assessment process is primarily now the mandate for all the higher education institutes, and there are deadlines owing to which you have to get yourself accredited. Otherwise, the outcomes and the repercussions of not getting accredited is immense. That is, you may be merged in the existing college, or probably you are asked to even close your shops. So considering the various criteria we will be talking in this workshop, I have been designated the responsibility of explaining you criteria number 7, that is the institutional values and the best practices. And I will be using again both the mediums to make it more relatable to the participants. Now, there are various criteria which we have to follow, and there are various standard operating procedures which are in place and given very, very clearly by accreditation authority, that is NAC in India, and owing to which we have to collect everything in terms of the activities what we do, with the supporting and conclusive evidence of each and every activity which we do, to make it a reality, that is the accredited institution is the outcome of the accreditation process. So this particular criteria, that is criteria number 7, it carries 100 marks. And it is equal for all the organizations, whether it is an undergraduate college, postgraduate college, constituent college, autonomous college. The criteria
the weightage is the same for this particular criteria number 7, that is the institutional values and the best practices. Now basically I will be talking on the concept that is the institutional values. What are institutional values, what are best practices, and what are basically included in this particular aspects of criteria number 7. Now it is basically the choice of all the higher education institutes, what they have to adopt to enhance their quality in the higher education system. आपको कौन सी बेस्ट प्रैक्टिस, कौन सी एक्टिविटीज करनी है, ये एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर छोड़ा जाता है. देयर इज नो कंपल्शन बेसिकली टू मूव ऑन टू a particular activity, that this is primarily the most important activity for a higher education institute. It is left on the higher education institute, that is in what way and in what pretext you want to enhance the value system of the organization or to follow any kind of a best practice. तो ये इसके अंदर freedom दिया जाता है किसी भी higher education institute को कि वो एक level achieve कर सके और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज को इंस्टिल कर सके अपनी कोर फंक्शनिंग में. अब देखिए, मैं कुछ आपको इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज के बारे में बताऊंगी. जैसे सबसे पहली बात मैं जो रखना चाहती हूँ वो है एकेडमिक फ्रीडम के ऊपर, कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो कोई भी कोर्सेज स्टार्ट कर सके, कोई भी स्किल कोर्सेज, कोई भी एड ऑन कोर्सेज, कोई भी एकेडमिक कोर्सेज स्टार्ट कर सके. बट जो कॉलेजेस स्पेसिफिकली किसी यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस, उनके पास ये फ्रीडम थोड़ी सी कम होती है. बट फिर भी एड ऑन कोर्सेज, स्किल कोर्सेज को हम आउट ऑफ क्लासरूम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं. सो पहली बात हम कहेंगे एकेडमिक फ्रीडम की. ऐसी यूनिवर्सिटीज जिनके पास पूरी ऑटोनॉमी है, पूरी फ्रीडम है, तो वो कोई भी कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हैं. ये एक इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज का सबसे इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन होता है, that is academic freedom. And let me tell you, the constituent colleges, अब जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर 80-85 कॉलेजेस हैं, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं उनके पास एकेडमिक फ्रीडम नहीं होती, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी लेवल पे आपका सिलेबस फॉर्म होता है और एज इट इज कॉलेजेस को फॉलो करने के लिए मिलता है. और ये फ्रीडम यूनिवर्सिटी के पास होती है कि वो सिलेबस फॉर्म करें और वो एज इट इज एंडोर्स हो जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेजेस में. बट आज की डेट में जितने भी, तभी हमारा एक कॉलम होता है कि जो भी इस एक्टिविटी में पार्ट लेता है उस एक्टिविटी का हम ब्यूराइज में ले लेते हैं कि कौन कौन सी रिविजन कमेटी में है, किस किस ने सिलेबस फॉर्मेशन कमेटी में पार्ट लिया है एंड ऑल दैट. तो ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल वैल्यू है, दैट इज द एकेडमिक फ्रीडम. उसके बाद है ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन. एक इकोनॉमी, मतलब जो भी इंस्टीट्यूशन है उसके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसकी होती है. थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम की हम बात करेंगे कि जितना भी ऑफिस वर्क है उसके ऊपर भी फ्रीडम होता है. आप कोई भी बेस्ट प्रैक्टिस, कोई भी अच्छी एक्टिविटी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी स्टार्ट कर सकते हैं. उसके बाद है कि एक इंस्टीट्यूशन का ग्लोबल आउटलुक होना चाहिए कि हमें अल्टीमेटली पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी का एक पार्ट बनना है. तो वर्ल्ड इकोनॉमी आज की डेट में स्पेशली आफ्टर पेंडेमिक हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो ऑनलाइन फोरम पे हैं. ऑनलाइन फोरम पे इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स को जोड़ना बिल्कुल ही आसान है. तो इससे क्या होगा कि हम बाहर के पार्टिसिपेशन से जब हम लेकर आएंगे, उन लोगों से बातचीत करेंगे, आपका आउटलुक बढ़ेगा, आपकी विजन ब्रॉड होगी और जो ग्लोबल लेवल पर काम हो रहा है वो आप बहुत इजीली नेशनल लेवल पे भी एंडोर्स कर सकते हैं. सो दैट मीन्स एक इंस्टीट्यूशनल वैल्यू में आप क्या क्या देख सकते हैं? एकेडमिक फ्रीडम, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, हैविंग अ ग्लोबल आउटलुक. ये सारी की सारी बात मैं कहूंगी कि ये हमारी इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज का एक पार्ट होती है. हम इस तरह से अपनी वैल्यू के इंस्टीट्यूशंस को, इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज को इंस्टिल कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और ब्रॉडन कर सकते हैं. जहां तक हो सके डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए और डाइवर्सिटी को बढ़ाना भी चाहिए. डाइवर्सिटी का हर सेंस में बात मैं करूंगी, एकेडमिक लेवल पे भी, स्टूडेंट लेवल पे भी, फैकल्टी लेवल पे भी, और जो भी आप एक्टिविटीज कर रहे हैं उसको आप डाइवर्स लेवल पर लेके आइए. डाइवर्सिटी हमेशा आपको पे करती है, क्योंकि अगर आप सिमिलर तरह की एक्टिविटीज करेंगे, सिमिलर
ऑर्गेनाइजेशन में और एक ही तरह की ऑर्गेनाइजेशन में, तो आपका विजन ब्रॉडन नहीं होगा। जितनी डाइवर्सिटी आप ऐड करेंगे अपनी एक्टिविटीज को लेकर और अपने फैकल्टी मेंबर्स को लेकर, अपने स्टूडेंट्स को लेकर, तो वो अपने साथ एक कल्चर लेके आते हैं, अपने साथ एक बातचीत लेकर आते हैं, अपने साथ एक डायलॉग लेके आते हैं, उनकी लाइफ ब्रिंगिंग, उनके लाइफ के लेसन्स, जहाँ पे भी आप पार्ट बनते हैं वहां पे डेफिनेटली अब जैसा मैं सीख कर आई हूँ अपनी लाइफ में, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो मेरी लाइफस्टाइल, मेरा जो एक टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस है ओवर अ पीरियड ऑफ 3 decades इन दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैं जो भी बात करूंगी मेरे पीछे मेरे एक्सपीरियंसेस जुड़े हैं, मेरे पीछे मेरी लाइफ की स्टोरी जुड़ी है। इसी तरह से जो भी डाइवर्सिटी अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशंस में लेकर आएंगे, अपनी एक्टिविटीज में, स्टूडेंट लेवल पे, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस पे, हमेशा डाइवर्सिटी को इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि एनीथिंग विच इज डिफरेंट, एनीथिंग विच इज आउट ऑफ बॉक्स, ये चीजें आपकी इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करती हैं, ये आपकी इंस्टीट्यूशन को एक अग्रसर जो भी प्रोग्रेस का पाथ है उस पर लेकर आती हैं। सो मैंने अभी आपको बात की कि एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एक फ्रीडम होती है कि वो किसी भी तरीके की इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज को बढ़ाए। तो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज आप कैसे बढ़ा सकते हैं? एक तो आपके पास एकेडमिक फ्रीडम होना चाहिए कि किसी भी तरीके के हम कोर्सेज, किसी भी तरीके के कोई भी स्किल कोर्सेज, या हमें लगता है कि हमें हमारी फैकल्टी को अपस्किलिंग की जरूरत है, तो हम इस तरह के कोर्सेज को स्टार्ट कर सकें। दूसरा, आपके पास ऑटोनॉमी होनी चाहिए। कहीं भी अगर आपको लगता है कि आपकी ऑटोनॉमी को क्लच किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है, पकड़ा जा रहा है, तो आप उस तरह से, अब जैसे आप भाग रहे हैं, कोई आपका बार बार रास्ता रोक रहा है, आपको बार बार पीछे खींच रहा है, तो आप वो उस रास्ते पे भाग नहीं पाएंगे। इसीलिए हम जब इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज की बात करते हैं तो हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं, हम फ्रीडम की बात करते हैं। जब भी फैकल्टी मेंबर्स को फ्रीडम मिलेगा आपके हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन से, प्रिंसिपल से, डायरेक्टर से, आपके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स है उनसे आपको एक फ्रीडम मिलेगा, तो आप अपना बेस्ट पॉसिबल एक्टिविटीज को दिखाते हैं। तो जहां तक हो सके आपको एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट भी बनाना चाहिए कि हम अपने फैकल्टी मेंबर्स को, हम अपने बच्चों को एक फ्रीडम देते हैं कि वो अपना कोई भी एक्टिविटीज अगर वो करना चाहेंगे विच इज रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन, डेफिनेटली वो वेंट तो प्रिंसिपल ही करेगा, बट वेंट करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि हमें अपने बच्चों को और टीचर्स को जितना आप फ्रीडम दे पाएंगे उतना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा होता है। बिकॉज एकेडमिक फ्रीडम, प्रैक्टिकल फ्रीडम और एक्शन की जो फ्रीडम की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर ग्रो करता है। सो दिस इज व्हाट वी वांट टू से, दैट एकेडमिक फ्रीडम, ऑटोनॉमी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये हर एक चीज में आपकी डाइवर्सिटी होनी चाहिए और फ्रीडम होना चाहिए। उसके बाद मैं आपकी बात करूंगी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम की। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन में आपका ऑफिस आता है, आपका अकाउंटिंग डिपार्टमेंट आता है, आपका जितने भी सेक्शन ऑफिसर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो आता है। तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियरली पता है कि एक इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक अच्छे लेवल पे चलने के लिए, एक फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही पाइवटल रोल प्ले करता है, क्योंकि सारी की सारी एक्टिविटीज किसके थ्रू होती हैं? कौन फैसिलिटेटर होता है? इट इज द ऑफिस विच प्लेज एज अ फैसिलिटेटर, एज अ रोड बिल्डर, एज अ पिलर फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। अगर आपका ऑफिस वीक है तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं चल सकती। तो इसीलिए हम इसमें इंस्टीट्यूशनल की वैल्यूज की बात करते हैं कि जो भी आपका ऑफिस है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, उसको भी फ्रीडम होनी चाहिए। आप कोई भी एक्टिविटीज अपने हिसाब से, इनोवेटिव एक्टिविटीज एडमिनिस्ट्रेशन प्लान कर सकता है। मैं आपको 2-3 एग्जांपल यहाँ पे देना चाहती हूँ। जैसे जितना भी डेटा होता है ऑर्गेनाइजेशन का, स्टूडेंट से रिलेटेड, फैकल्टी से रिलेटेड, सारा का सारा डेटा कौन स्टोर करके रखता है? इट इज द administrative office who is responsible for keeping of the records, for keeping of the all the vital information related to the faculty members and related to the students. तो ऐसा वो कोई भी एक्टिविटी बना सकते हैं, ऐसी वो कोई भी प्रैक्टिस बना सकते हैं which makes it a best practice। जैसे आपके पास नॉर्थ ईस्ट के बच्चों का डेटा है, तो आप एक नॉर्थ ईस्ट के बच्चों की लिस्ट निकाल सकते हैं, उनके अंदर आप स्कॉलरशिप ऑफर कर सकते हैं कि कोई भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है, या कोई भी किसी भी फैमिली मेंबर्स की भी डिटेल होती है, इनकम की भी डिटेल होती है, तो आप कोई भी स्कॉलरशिप ऑफर कर सकते हैं।
आप ऐसा कोई भी काम कर सकते हैं जो, जैसे फॉर एग्जांपल एक टीचर ने बहुत अच्छे रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, तो आप अपने आप ही ऑफिस की तरफ से एक रिपोर्ट बना के दे सकते हैं कि इस डिपार्टमेंट में सबसे अच्छा काम कॉमर्स डिपार्टमेंट में मिस्टर एक्स ने किया है या मिस्टर वाई ने किया है। तो इस तरह की रिपोर्ट्स अगर वो अपने आप निकाल कर लाते हैं, ऑफ कोर्स इट हैज टू बी इन कंसल्टेशन विद द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, बट ऐसा कुछ भी इनोवेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस कर सकता है, विच विल डेफिनेटली बी कॉल्ड एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई पकड़ रहा है कि आप कुछ नया नहीं कर सकते, कुछ कम कर सकते हैं। आपको एक एकेडमिक फ्रीडम दी जा रही है टीचर्स को, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम दी जा रही है एडमिनिस्ट्रेशन को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी एक फ्रीडम दी जा रही है कि कोई भी इनोवेटिव काम या कोई भी अच्छा काम वो कर सके। इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और बेस्ट प्रैक्टिसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीडम और इनोवेटिवनेस। जितना नया काम आप करेंगे, जितना फ्रीडम से आप करेंगे, उतना आप इंस्टीट्यूशन को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद है कि इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। जहां तक हो सके आप सारे कॉलेज के हर स्टाफ मेंबर को, चाहे वो टीचिंग है चाहे वो नॉन टीचिंग है, किसी तरीके से आपको करना है और इसको डॉक्यूमेंट भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, माय बोथ द सन्स वर इन दिल्ली पब्लिक स्कूल द्वारका। ये आपको छोटे एग्जांपल्स में इसलिए देती हूँ कि आप रिलेट कर सके मैं क्या अपनी बात में कहना चाह रही हूँ, मेरी बात का क्या सेंटर है, क्या नुआंस है। तो मेरे दोनों बच्चे जब पढ़ रहे होते थे, नाउ तो यू नो दे आर इनटू द हायर स्टडीज और वो सारा स्कूलिंग कर चुके हैं। तो जब स्कूलिंग में थे बच्चे, तो मेरे को डीपीएस की सबसे अच्छी पॉलिसी लगती थी कि अगर उनकी 10th क्लास में या 8वीं क्लास में या जितने भी पूरे 5000 बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल पूरी क्लासेस को मिलाकर 10,000 बच्चे हैं, तो एनुअल डे पे पूरे के पूरे 10,000 बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। चाहे वो स्टेज पर पेड़ बने हैं, चाहे वो सितारा बने हैं, चाहे उनको स्टेज पे चढ़ के एक सीन में उतर जाना है या कुछ भी करना है, 100% पार्टिसिपेशन was there in the annual day of the school, whether it was a teaching staff, whether it was a non-teaching staff, whether it was a student. तो अगर हम इसी तरीके की एक्टिविटीज को अगर हम डॉक्यूमेंट भी करेंगे कि हम अपने कॉलेज में, हम अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर रखते हैं, सभी को इंक्लूड करके चलते हैं। अगर आपके कुछ डिसेबिलिटी या पीपल विद स्पेशल एबिलिटीज हैं तो उनको भी इंक्लूड करें, जिसकी जो कैपेसिटी है उसको उस हिसाब से इंक्लूड करें। तो अगर आप इंक्लूसिव एटमॉस्फेयर बनाएंगे तो इंक्लूसिवनेस के नंबर होते हैं। आप अपना इंक्लूसिव सर्वे करा सकते हैं, आप उनके आइडियाज ले सकते हैं। मैं आपको इस एक और एग्जांपल देती हूँ। आप अपने कॉलेज में एक आइडिएशन वर्कशॉप कर सकते हैं। आइडिएशन वर्कशॉप का मतलब होता है कि आइडियाज की वर्कशॉप। तो आप ये एक इस तरह का पेपर आप मेंशन कर सकते हैं, एक नोटिस आ सकता है प्रिंसिपल की तरफ से कि आप किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज या एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम ला सकते हैं, इसके आइडियाज दीजिए। आप मान नहीं सकते, आइडिएशन वर्कशॉप से आपके सामने 100 आइडिया आ जाएंगे। उन 100 आइडिया में से कम आप 5 ऐसी चीजें इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे जो एक इंस्टीट्यूशन को इंक्लूसिविटी की तरफ लेकर जाएगा। तो जिसके लिए पॉलिसी बन रही है, अगर आप उन्हीं से आइडिया लीजिए तो इट इज गोइंग टू बी वंडरफुल। तो ये आप मेरी बात को अगर आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपका कॉलेज, क्योंकि उन लोगों का खुद का आइडिया है कि हम कैसे इंक्लूसिवनेस ला सकते हैं, हम कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं सभी लोगों को, डिसेबिलिटी को लेकर, ब्लाइंड को लेकर, ट्रांसजेंडर को लेकर। तो ऑटोमेटिकली आपका जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पाथ पे चला जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको सारे वेटेज बता रही हूँ कि ये क्राइटेरिया 7 में हम इन सब चीजों की बात करेंगे। दैट इज टू ब्रिंग एकेडमिक फ्रीडम, टू ब्रिंग ऑटोनॉमी, टू हैव द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रीडम, टू हैव अ ग्लोबल आउटलुक ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जितना आप, मैं आपको थोड़ा सा और एग्जाम्पल दूंगी। आप कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटीज के जिनके पास QS रैंकिंग है, हमारी 2 इंटरनेशनल रैंकिंग होती है, जैसे हम NAC की बात करते हैं यहाँ पे। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए देयर आर 2 रैंकिंग्स which are widely accepted. One is QS and the other is THE. तो अगर आप इन इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स देखेंगे, बिकॉज एवरीथिंग इज इन द पब्लिक डोमेन, तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी कि हमारा इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन से कितना पीछे है।
हम ऐसी कोई नेगेटिव फीलिंग की बात नहीं करेंगे, हम पॉजिटिविटी की बात करेंगे कि ऐसा वो क्या कर रहे हैं कि उनकी प्लैटिनम रेटिंग है, उनकी गोल्डन रेटिंग है, उनकी सिल्वर रेटिंग है। तो हम वो वाली एक्टिविटीज को एटलीस्ट स्टार्ट कर सकते हैं, एक पहला कदम उस दिशा में उठा सकते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल आउटलुक की तरफ लेकर जाएं। डाइवर्सिटी की बात करी मैंने आपके साथ, इंक्लूसिविटी की बात करी, उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ये मैं आपको क्राइटेरिया 7 का डोमेन समझा रही हूँ कि क्राइटेरिया 7 में आप क्या क्या चीजों को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद में सारे क्राइटेरियाज को इंडिविजुअली भी समझाऊंगी विद द वेटेज एंड द क्राइटेरिया, ठीक है, एंड द की इंडिकेटर्स। तो ओवरऑल अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट देती हूँ इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस का, वी हैव टू टॉक अबाउट एकेडमिक फ्रीडम, autonomy, administrative freedom, global outlook of the institution, diversity, inclusiveness. Now I'm coming to a very important point called social responsibility. Social responsibility का मतलब होता है giving back to society, कि आप किस तरीके से सोसाइटी को वापस दे सकते हैं। जैसे एक बिजनेसमैन का जहां पे इंडस्ट्री है तो वो अपने वहां के लोगों को नौकरी दे सकता है, सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस। वहां की सड़कें टूटी हुई हैं तो वो सड़कें बनवा के दे सकता है। वहां पे लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है तो वो एक आरओ प्लांट, इंडस्ट्रियल आरओ प्लांट लगा सकता है जहाँ पे पानी उनको मिल सके। और उसके बाद ऐसी कोई भी आप एक्टिविटी वहां पे प्लांटेशन करा सकता है ताकि आपको अच्छी हवा मिल सके, आप पॉल्यूशन को कम कर सके। तो ये आपको देखना है कि एक इंस्टीट्यूशन, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट सोसाइटी के लिए क्या कर सकता है। इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगी। जैसे आपके कॉलेज में कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ टीचर्स हैं, तो आसपास का जो स्लम है, विलेजेस हैं, आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं, उनकी सारी विश लिस्ट पूरी कर सकते हैं, उनके लिए फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। आप जैसे पुराने मोबाइल्स जो हमें 1 या 1,500 में मार्केट में बेचने हैं, आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने टीचर्स को कि आप प्लीज पुराने मोबाइल्स, अपने पुराने टेबलेट्स, अपनी पुराने कंप्यूटर्स, ये प्लीज आप ना बेचें मार्केट में। ये आप वहां पे एक कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं पुराने इक्विपमेंट के साथ, जहाँ के जो गरीब बच्चे हैं वो उनको आप एक डिजिटल लैब खोल के दे सकें और आप उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। तो आपके बच्चे एनसीसी के, एनएसएस के, आप एक इस तरह का प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जिस तरीके से आप सर्विस करेंगे उस तरीके से आपको इसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। और इसके बहुत अच्छे नंबर होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के कि it is in which way that you are giving back to society, it is which way that you are trying to help the society in sanitation, in education, in opening a medical center. आप किसी भी तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प कर सकते हैं, and this is what is counted in the social responsibility and is definitely a very vital part of the institutional values and the best practices in criteria number 7. अब उसके बाद देखिए, आप इंटेग्रिटी की बात करेंगे, इक्वालिटी की बात करेंगे, इक्विटी की बात करेंगे। जितने भी जेंडर आपके ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे मैंने आपको जेंडर ऑडिट के बारे में बताया था, ये सारा का सारा आप जो जेंडर ऑडिट का क्राइटेरिया है या की इंडिकेटर्स हैं, वो सारे क्राइटेरिया 7 में ही आपको दिखाने हैं। क्वालिटी ऑडिट्स हैं, क्वालिटी अश्योरेंस है, आप इवन अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस में आरटीआई ऑडिट भी कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल इनोवेटिव आइडिया है आपके पास। जैसे बहुत सारे लोग ना सिर्फ तंग करने के लिए बैठे होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का राइज नहीं देख पाते हैं, तो वो एक बहुत नेगेटिव तरीके से हर एक टाइम कॉलेज के ऊपर आरटीआई लगाते हैं। और वो अच्छे प्रिटेक्स्ट में नहीं होती, गलत प्रिटेक्स्ट में होती है कि पिछले 10 साल का डेटा दो। तो सारी जो कॉलेज की एनर्जी है वो उस तरह के डेटा और उस तरह के जवाब बनाने में लग जाती है। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आपको बिहेव करना चाहिए कि आरटीआई आप एक ऑर्गेनाइजेशन में तब लगाइए जब आपको एक्चुअली वो इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आरटीआई ऑडिट आप करवाइए कि जितने भी हमें इंफॉर्मेशन हमारे से कोई मांगता है, हम उसको बहुत ही प्रोएक्टिवली प्रोवाइड करते हैं। एक छोटा सा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर आप इंटरनल स्टाफ को रख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो उसके बाद क्या है कि ये जितने भी इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम मैंने आपको बताए, इक्विटी, इक्वालिटी, अगर आप सारे जेंडर को इक्वली ट्रीट करेंगे, मेल्स को, फीमेल्स को, ट्रांसजेंडर को,
तो इक्विटी जो होता है इट इज अ टूल फॉर इक्वालिटी। धीरे धीरे वो अपॉर्चुनिटी जो है वो इक्वालिटी में बदल जाएगी और जितने भी लोग एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में रहने से बहुत ही खुश होंगे कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, वेरिन हम जितनी भी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं हमने वो फैसिलिटीज उनको दी हुई हैं। अब मैं आपको बताती हूँ बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में, उसके बाद हम क्राइटेरिया वाइज इसको डिस्कस करेंगे। आपको एक ओवरव्यू देना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप उसको उसी प्रीटेक्स्ट में समझ पाए। बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड करती हैं। एक बार चीज करने से, एक ही बार एक्टिविटी करने से वो बेस्ट प्रैक्टिस में कन्वर्ट नहीं होती। लेट मी टेल यू, आप जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं वो रेप्लिकेबल हो, एडेप्टेबल हो, ट्रांसफरेबल हो, इम्प्लीमेंटेबल हो। ये 4 चीजें आप बहुत ध्यान से समझ लीजिए। जो भी एक्टिविटी अगर आप एक बार कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो वो एक्टिविटी जो है वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं मानी जाएगी अनलेस एंड अनटिल इट इज रेप्लिकेबल, इट इज एडेप्टेबल, इट इज ट्रांसफरेबल एंड इट इज इम्प्लीमेंटेबल। सो अगर आप ये कर रहे हैं 4 चीजें तो आपकी कोई भी एक्टिविटी को हम बेस्ट प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो फेलियर का चांसेस है वो मिनिमाइज हो जाएंगे और आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इसको बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो अब मैं आपको की इंडिकेटर्स के बारे में और बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो आपके जो की इंडिकेटर हैं, सबसे पहला है 7.1, क्राइटेरिया 7 है। तो इसके कुछ जो की इंडिकेटर्स हैं और सब पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बहुत ही तरीके से, बहुत ही डिटेल में आपको समझा रही हूँ। उसी तरीके से आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं। और नैक की वेबसाइट पे एक नैक का मैनुअल है और नैक का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है डॉक्यूमेंटेशन का। वो सिंपली आप अपने स्टाफ मेंबर्स को जो कि नैक टीम में है, NIRF टीम में है या कोई भी रैंकिंग फ्रेमवर्क की टीम में है, आप उनको वो मैनुअल शेयर कर सकते हैं। बट द आइडिया इज हियर, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू कि वो किस तरीके से आप इसमें वर्क करेंगे। सो आई एम मूविंग ऑन to the first criteria and the key indicator 7.1. 7.1 indicator जो है आपका key indicator, it is related to institutional values and social responsibility. ये अंडर ग्रेजुएट के लिए भी 50 नंबर है और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के लिए भी ये 50 नंबर है। इसके अंदर टोटल 5 क्वालिटेटिव मैट्रिक्स हैं और 6 क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स हैं। अब मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस समझाती हूँ। क्वालिटेटिव मैट्रिक्स में आपको 500 शब्दों में एक कॉलेज की रिपोर्ट बना के देनी है कि आप इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज पे और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या कर रहे हैं 500 शब्दों में। तो जिसके अंदर आपने 500 शब्दों में बताना है उसको हम क्वालिटेटिव मैट्रिक्स कहते हैं, क्योंकि जितने भी क्वालिटेटिव मैट्रिक्स होते हैं उसमें आपको 500 वर्ड्स में एक रिपोर्ट बना के अपलोड करनी होती है कि आपके इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे क्या काम हो रहा है। उसको आपको बहुत ही ब्रीफली, क्रिस्प और अच्छी लैंग्वेज में, क्रिस्प तरीके से, अच्छे तरीके से 500 शब्दों में आपको एक्सप्लेन करना है। अंडर ग्रेजुएट कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज दोनों के लिए इसके जो वेटेज है वो सेम है, दैट इज 50 मार्क्स। उसके बाद जो आपकी बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसका एक ही क्वालिटेटिव पैरामीटर है, उसमें 7.2 कहते हैं उसको। ये दोनों ही इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो चाहे वो अंडर ग्रेजुएट हो, इसमें 30 मार्क्स का है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बात करी 7.1 की। 7.1 इट इज इन रिलेशन टू इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज and corporate social responsibility, which is having 50 marks for undergraduate and 50 marks for the postgraduate, and it has 5 qualitative parameters in 7.1 and 6 quantitative parameters in 7.1. मैंने आपको qualitative parameters की तो बात बता दी, जिसके अंदर आपको कोई भी qualitative parameters हो तो उसमें आपको 500 words में बताना है। अगर हम क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स की बात करते हैं तो इसमें जो नैक है वो क्या इंटरेस्टेड होता है, नंबर में। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर ऑफ एक्टिविटीज, कितनी एक्टिविटीज। सो इट इज कंसर्न्ड अबाउट द नंबर ओनली, whereas in the qualitative parameters it is the NAC is asking you for a report in a words which is limited to and up to 500 words.
तो 7.1 इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है, which is having 5 qualitative and 6 quantitative parameters, followed by 7.2 which talks about the best practices. इसमें सिर्फ एक qualitative parameter है, which is very important for you to understand. उसके बाद है 7.3. 7.3 में आपका एक qualitative parameters है, wherein we will talk about the institutional distinctiveness, कि ऐसा एक इंस्टीट्यूशन में क्या अलग है जिसकी वजह से उस इंस्टीट्यूशन की पहचान है. जैसे किसी कॉलेज में एक ऐसा पर्टिकुलर कोर्स चल रहा है जिसके अंदर 100% प्लेसमेंट है, किसी इंस्टीट्यूशन में कोई ऐसा कोर्स चल रहा है जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक, तो वो आपकी इंस्टीट्यूशन को बिल्ड कर रहा है. तो ऐसा कोई भी पैरामीटर जो एक इंस्टीट्यूशन को बिल्ड करे, उसको एक पहचान दे, उसको एक अलग तरीके से लोग देखना शुरू हो जाए, जिसकी वजह से उस ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन बिल्ड हो, इसको बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस. तो इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस सिर्फ एक क्वालिटेटिव पैरामीटर है अंडर 7.3. तो हमने 3 की इंडिकेटर्स की बात करी इसके अंदर, 7.1, 7.2 और 7.3. 7.1 में इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आप सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, ऐसा कौन सा वैल्यू सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, जिसके अंदर आपके 5 क्वालिटेटिव और 6 क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स हैं. फिर 7.2 में हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है, 500 शब्दों में आपको मेंशन करना है. तीसरा है इंस्टीट्यूशनल डिस्टिंक्टिवनेस विच इज कॉल्ड एज 7.3, जिसके अंदर अगर हम ये टोटल बात करें, इसके अंदर आपके क्राइटेरिया नंबर 7 में 100 मार्क्स का है, 7 क्वालिटेटिव और 6 क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स हैं और 13 मैट्रिक्स हैं टोटल, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मिलाकर. क्वालिटेटिव ज्यादा है और क्वांटिटेटिव कम है. 7 + 6 इट इज इक्वल टू 13 मैट्रिक्स, which is a total of the 7th criteria, that is institutional values and best practices. अब मैं इसको अलग अलग करके हर एक चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ. एक छोटा सा प्रयास है मेरा कि आप लोगों को ये चीज समझ में आ जाए, क्योंकि एक्रेडिटेशन और असेसमेंट प्रोसेस जो है अब वो मैंडेटरी है सबके लिए. आपका इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा, आपके लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, और ये मैंडेट जितनी जल्दी आप फॉलो करेंगे, आपको क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन, ये सब चीजें इंपैक्ट होती है A&A प्रोसेस से अंडर द रिवाइज्ड एक्रेडिटेशन फ्रेमवर्क. तो मैं पहले बात करती हूँ 7.1.1 की. इसमें क्या है, दिस इज अ क्वालिटेटिव मैट्रिक्स, और इसके अंदर आप क्या बात करेंगे, द मेजर्स इनिशिएटेड बाय द इंस्टीट्यूशन for promotion of gender equity during last 5 years. Again I'm repeating, इसके अंदर आपको इंस्टीट्यूशन की वो लिस्ट देनी है कि आप जेंडर इक्विटी को लेकर, कि आप जेंडर को सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम्स, जो मैंने कल बहुत डिटेल में बात करी थी, कि आप जेंडर इक्विटी की तरफ कौन कौन से प्रोग्राम्स आप कर रहे हैं, उसकी आपको लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट को फॉलो करना है. तो ये क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है 7.1.1, और 500 वर्ड्स में आपको इसके बारे में लिखना है कि आप क्या कर रहे हैं. और मैं अगर आपको इसकी वेटेज बताऊं तो ये 5 नंबर का होता है. इसके अंदर आप जेंडर ऑडिट भी कराएंगे, आप एक लिस्ट भी बनाएंगे कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज फॉलो कर रहे हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड इक्विटी टू द एंटायर जेंडर फ्रेमवर्क व्हाट यू आर फॉलोइंग इन योर इंस्टीट्यूशन. मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर के लिए आप क्या क्या फॉलो कर रहे हैं. इक्विटी जो होता है, इक्विटी से आप इक्वालिटी की तरफ मूव करते हैं. ये मैं आपको बहुत क्लियरली समझा रही हूँ, क्लियरली बता रही हूँ. इसमें आपको सेफ्टी और सिक्योरिटी आप कैसे फॉलो कर रहे हैं अपने स्टाफ मेंबर्स के लिए, अपने स्टूडेंट्स के लिए, अपने नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए. दैट इज व्हाट आर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज यू आर फॉलोइंग. The gender audit, equality or opportunities provided to the male, female and the transgender. Then how about security, that is आपका पूरे कैंपस में CCTV लगे हैं कि नहीं है, क्योंकि आप बहुत देखते हैं कि
रेप की प्रॉब्लम आ रही है, एसिड अटैक्स की प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट्स कैंपस में हो जाता है, खास करके इलेक्शन टाइम में थोड़ा इंस्टीट्यूशंस जो है वो वल्नरेबल हो जाती हैं। तो सीसीटीवी अगर आपका होगा, कोई चोरी हो जाती है, किसी का सामान चोरी हो जाता है, कोई किसी को मारने की कोशिश करता है, कोई भी एक्टिविटी किसी भी इंस्टीट्यूशन में कभी भी हो सकती है। तो अगर आपके पास कैमराज इंस्टॉल्ड हैं तो आप रीप्ले कर कल्प्रिट को बहुत जल्दी पकड़ सकते हैं। तो इक्विटी में ये सारी चीजें आ जाती हैं। इट इज अ पाथवे टू इक्वालिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सीसीटीवी इन द कैंपस, बिल्डिंग कार पार्किंग, security issues, girls common room, boys common room, all the steps where gender equity is taken care of is a part and parcel of 7.1.1 which carries 5 marks. The weightage is 5 marks. तो आपका गर्ल्स कॉमन रूम, बॉयज कॉमन रूम और ट्रांसजेंडर के लिए अगर आपके एटलीस्ट 2 या 3 है या 1 भी है तो आपको एक छोटा सा रूम ऐसा जो कि मल्टीपल यूज में आता है वो आप ट्रांसजेंडर के लिए कर सकते हैं। और खास करके उनकी वॉशरूम की अगर बात होती है तो आप उनके लिए एक स्पेशली एनेबल्ड, बिकॉज दे आर द पीपल विद अ वेरी स्पेशल नीड, तो आप ऐसा कर सकते हैं, एक छोटा सा वॉशरूम उनके लिए ट्रांसजेंडर एनेबल्ड बना सकते हैं और प्रॉपर साइनेज के साथ कि ये जो वॉशरूम है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रांसजेंडर के लिए यूज होगा और कोई भी इसको यूज नहीं कर सकता। दिस इज गोइंग टू मेक योर इंस्टीट्यूशन very, very sensitive about the entire gender, and it is going to give the gender equity to the institution, which is very important. Again, I'm repeating what all parameters you have to take care of, which carries 5 marks, 7.1.1, that is what specific steps the institution is taking towards the gender equity, in which what all parameters are included. The first is your safety and security, your gender equity, CCTV in the campus, building car parking, security, girls common room, transgender common room, boys common room. So all these steps you have to mention in the policies of your institution, which we call it as a gender policy, कि हमारे लिए सारे जेंडर इंपॉर्टेंट है और गर्ल्स की स्पेशल नीड्स के लिए हमारे पास गर्ल्स कॉमन रूम है, बॉयज की स्पेशल नीड्स के लिए बॉयज कॉमन रूम है, ट्रांसजेंडर के लिए ट्रांसजेंडर कॉमन रूम है और किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए हमारे पास एक काउंसलर हमने अपॉइंट किया हुआ है एट अ बैक एंड कॉल। वो हमारी वेबसाइट पे उसके टाइमिंग्स और वो मेंशन्ड है, वेयर इन दे प्रोवाइड फ्री जेंडर काउंसलिंग। ये बहुत जरूरी है, लेट मी मार्क इट अगेन, वेरी इंपॉर्टेंट। सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा जो काउंसलिंग वाला पार्ट है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अंदर आप सारे ऐसे स्टेप्स लेंगे जो जेंडर पॉलिसीज का पार्ट है और जेंडर काउंसलिंग इसमें आप करवाएंगे और कोई भी किसी को भी किसी भी तरीके का इशू है तो वो उस काउंसलर से बात कर सकता है, विच इज डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और इसके अंदर एक जो भी आपका काउंसलर है उसको एक प्रिवेसी एग्रीमेंट जरूर आपको साइन करवाना चाहिए, जिसके अंदर बच्चों की कोई भी प्रॉब्लम है, फैकल्टी की कोई भी प्रॉब्लम है, नॉन टीचिंग की कोई भी प्रॉब्लम है, ट्रांसजेंडर की कोई भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि उसका मजाक बन के रह जाए। उनको एक प्रिवेसी एग्रीमेंट एक काउंसलर को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के साथ साइन करना चाहिए कि जो भी डेटा उनके पास हो आता है कि हमारे पास 10 लोग काउंसलिंग के लिए आए, सो दे शुड रिस्ट्रिक्ट देयर रिपोर्ट ऑन द नंबर, नॉट स्टेटिंग कि कौन उससे काउंसलिंग लेने आया था या कैसे उसको क्या प्रॉब्लम थी और उसकी क्या उसने रिपोर्ट दी या उसको कैसे उसको सॉल्व किया। ये सारी चीजें बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए। बट ये है कि उनको एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि हमारा जो काउंसलिंग सेंटर है वो बहुत ही एक्टिव है, प्रोएक्टिव है और आप बहुत ही फ्रीली हमारे पास विजिट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपकी बात है जो आपको तंग कर रही है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब मैं प्रिंसिपल थी औरबिंदो इवनिंग में, तो वहां पे एक लड़की आई, रोती हुई आई मेरे पास, सीधा गार्ड को बोलती है मुझे प्रिंसिपल से मिलना है। तो मैंने उसको अलाउ किया बिकॉज द गर्ल वाज क्राइंग एंड आई वांटेड टू नो व्हाट हैपेंड टू हर। तो उसने बोला कि मैम मुझे कोई मार रहा है। सो आई वाज टेकन अबैक कि एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जहाँ पे इतने गार्ड्स हैं, इतना पुलिस, 2 गार्ड्स हमेशा आपके दे आर आर्म्ड विद द ऑल दी आर्म्स एंड एम्युनिशंस विद देम की हो, तो हमेशा आर्म्ड खड़े रहते हैं। उसके बाद इस लड़की को कौन मार रहा है? तो मैंने उससे डिटेल में बात करी। मैंने अपनी जो SSC कॉलेज कंप्लेंट कमेटी है उनको कॉल किया
और इट वाज अ वर्किंग डे। तो वो सारे मेरे कमरे में आए, हमने उस लड़की से बात करी कि बेटा क्या प्रॉब्लम है, आपको कौन मारने आ रहा है। तो आपको ये सुनकर बड़ी हैरानी होगी कि उसने बोला कि मेरे को मेरे सामने अभी भी वो खड़ा है और वो मुझे मार रहा है। तब हमें समझ में आया कि दिस गर्ल इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। उसको हेलुसिनेशंस हो रही थी कि उसको कोई आकर चाकू मार रहा है, उसको नींद से उठा रहा है। कहती है मैम देखो ये मेरा गला दबा रहा है। हम तो वहां पे कोई भी नहीं देख रहे थे। तो फिर हमने स्पेशली जो हमारी काउंसलर है, हमारे एक मेडिकल रूम है, नर्स भी रहती है, तो हमने वो काउंसलिंग उससे कराई, उसके पेरेंट्स को बुलवाया और देयर एंड देन वी आस्क्ड हर टू टेक अ लीव ऑफ अबाउट 1 वीक और उसका प्रॉपर उसको उसके एंजाइटी लेवल्स को कंट्रोल किया। उसके बाद वो मेरे से मिलने आई एंड टुडे after those n number of sittings which her parents proactively took, but हमने proactively इस चीज को identify किया and now the girl is hale and hearty as far as her mental health is concerned. तो एक किसी भी इंस्टीट्यूशन में आज की डेट में स्पेशली आफ्टर कोविड मेंटल हेल्थ इज अ बिग इशू। तो बहुत ही अच्छा उस को हमने हैंडल किया और आई फील वेरी प्राउड कि हमने बहुत जल्दी ही उसके इश्यूज को टैकल कर लिया। और वो मतलब हमें तो पहले समझ ही नहीं आ रही थी कि हमें लगा कि कोई इसको गला दबा के भाग रहा है या कुछ कर रहा है, बट बाद में समझ आया इसको साइकोलॉजिकल इशू है। पर हमने वो चीज किसी से भी शेयर नहीं करी और जो भी हमारे कोर मेंबर्स थे उन्होंने प्रोएक्टिवली करके और इस इशू को सॉर्ट कर लिया। तो इंस्टीट्यूशन को इस तरह से प्रोएक्टिवली पार्ट लेना चाहिए क्योंकि मेंटल इश्यूज जो होते हैं वो फिजिकल इश्यूज से भी प्रॉब्लमेटिक होते हैं। हेल्थ वाले इश्यूज तो आपकी दवाइयों से ठीक हो जाते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा समय लगता है। तो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों से बातचीत इनफॉर्मल लेवल पे भी आपको करते रहना चाहिए कि बेटा आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या आपकी नजर में ऐसा कुछ तो नहीं है कि कोई भी बच्चे को कोई स्पेशल हेल्प की जरूरत है। तो डू कॉल मी, आई एम अवेलेबल एट योर बैक एंड कॉल। मैं पूरे 24 घंटे आपके लिए बच्चे अवेलेबल हूँ। अगर आपको मिडनाइट भी कोई इशू है तो आप मेरे पास आइए। सो दैट काइंड ऑफ एन एक्सेसिबिलिटी विल एक्चुअली प्ले अ वेरी वाइटल रोल क्योंकि बच्चों की जर्नी एक कॉलेज में सिर्फ 3 साल की होती है। अगर आपका पीजी और यूजी मिलाएं तो 5 साल की होती है। तो बच्चे एक बहुत ही अच्छे नोट पर कॉलेज से जाएं कि हमारा हर चीज वाउच की गई थी, हमारी हर चीज का ध्यान रखा गया था। तो ये चीजें एक इंस्टीट्यूशन को हमेशा फॉलो करनी चाहिए और यही इंस्टीट्यूशन की वैल्यू सिस्टम बिल्डअप करता है एंड इट कम्स अंडर द बेस्ट प्रैक्टिसेस आल्सो वेयरइन द इंस्टीट्यूशन विल बी वेल रेटेड। तो ये काउंसलिंग वाला तो अगर किसी भी कॉलेज में नहीं है तो आप प्लीज सेटअप कर लीजिए एक अच्छे काउंसलर जिसकी अच्छी रेटिंग है, जो बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है। अगर आप 2 अफोर्ड कर सकते हैं तो एक मेल काउंसलर और एक फीमेल काउंसलर आपको दोनों रखने चाहिए। और यू कैन हैव सम टाई अप्स वेयरइन क्योंकि कई काउंसलर्स जो होते हैं वो एक स्पेशल मतलब दे विल नॉट इवन चार्ज फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन कि वो फ्री सर्विस देते हैं। तो आप ऐसे गवर्नमेंट काउंसलर्स और उनके साथ भी एमओयू साइन कर सकते हैं कि आप हमारे बच्चों को बहुत उनकी नीड्स का ध्यान रखिए और we will not trouble you. If we have any issue then we will be talking to you. तो ये चीजें विजिबिलिटी बच्चों को जरूर पता होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूशन में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो किसको अप्रोच करें। ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और ये जो काउंसलिंग वाली मैंने आपको बात कही, इसका वेबसाइट पे कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए कि whom to talk, what to talk, when to talk। तो बच्चों के पास अगर ये है, उनके स्टूडेंट यूनियन में भी आपको ये पूरा actually I've been asked to speak in both I'm very comfortable in English also, so if you want I can because I was told that there are people from the rural background, so I would be conversing in both the languages, but if the participants feel that it should be in English, I will continue in English, not an issue. So we were talking about what are the vital steps which the organization should take as far as the institutional values are concerned, that is 7.1.1, which carries 5 weightage. So all the steps where the gender equity is taken care of, it includes the gender counseling, which is free and confidential. That's very important. So it may be related to your anxiety, any kind of a relationship issue, any kind of a depression. So the people should have this thing in mind that it is like trustworthy, that like you can very easily go to the counselor, he will sort the issue, and the things which we have discussed with the counselor are kept confidential.
So, today if we talk about after pandemic, still the pandemic is not over. So in this era, there is a loneliness concept which is becoming very, very, talked about, and a very hot topic. And people are actually suffering from the mental illness rather than the physical illness. So we should all join our hands together if you're talking about a higher education institute, and work towards clearing all depression, etc. And of course the institution should play a pivotal role in arranging such counseling sessions. And so while answering this, the institution has to take care of all the points which I've mentioned you, that you have to mention about the girls common room, the boys common room, then about the transgender issues, how the institution is taking care of that, the CCTV, the security issues, the parking issue, all the facilities which are available in campus, including your counseling sessions, etc. So together in 500 words, you will be relating and enveloping the issues which we have discussed. So this was 7.1.1, wherein you have to mention in 500 words, because it is a qualitative matrix, and the weightage is 5 marks. So now moving on to 7.1.2. So here we also have, it's a quantitative matrix, wherein the marks is for, the marks here which are assigned is 5. So here the institution has the facility for alternative sources of energy and energy conservation. So in this particular criteria, that is 7.1.2, which carries 5 marks, and it is a quantitative matrix, you have to mention that what alternative sources of energy the organization is pursuing. That is whether it is having, because here the NAC is bothered about the number, that is how many solar energy is there, how much biogas plant are there, then about the wheeling of the grid. What is a wheeling of a grid? Like if the power cuts is there, so automatically your grid is transferred to a government, the grid. So automatically the energy and the source of light will be provided to the institution. So similarly, you have a sensor based energy conservation. So automatically, like if your petrol or the diesel is over, then automatically it switches on to the gas, or gas switches on to the petrol. So I'm just talking about the sensors. So if you have a sensor based lighting system in your college, so automatically if nobody is sitting, so if there is no movement, so automatically the lights will be switched off. So here we are talking about the alternative sources of energy, which we call it as a sustainable footprint. Sustainable footprint means that you are able to conserve the energy, and you have to mention in the quantitative matrix about the solar energy, the biogas plant, the wheeling of the grid. This wheeling of the grid is very important. कि आपकी कब लाइट चली जाती है तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट के ग्रिड पे आपका वो पूरा ट्रांसफर हो जाता है फेज. तो मतलब इंस्टीट्यूशन में लाइट का इशू नहीं रहता, बट इसके साथ आपको उनके साथ MOU साइन करना पड़ेगा. सो और एक नैक को पूरा रिपोर्ट देना पड़ेगा कि हमारे पास, क्योंकि SOP में ये मेंशन्ड है कि हाउ आर यू टैकलिंग द व्हीलिंग ऑफ द ग्रिड, कि automatically it will be transferred to the government grid. Then about the sensor based energy conservation system, the institutions which have not put the sensor based, so request to everyone to move on to more sustainable practices, because we have only one planet. We have to save the energy, and we have to save our mother earth. So in lieu of this, you have to mention whether you have a solar based energy conservation system, which is again sensor based, biogas plant, like windmill, geothermal plants, sensor based electricity conservation system, and the use of LED bulbs and power efficient equipment. So nowadays we have good power based equipment. So if you are still running on your old system, take a permission from your governing councils or your governing body. Here the pivotal role has to be played by the head of the institution, that we want to build the solar energy plants in our institution, or we want to build the windmill or a geothermal plants. Especially I'm talking about the colleges which are in the rural area, so they can all install all these things. And so use of LED bulbs, this is the basic what you can do, because this saves the energy. So we should move on to the modern technology.
which is more, energy efficient. So that's, you should mark this, that all the institutions should make a constant endeavor, a constant effort to convert their campuses into the energy efficient campus. So the answers here, because it's a quantitative matrix, so the answers you have to take is whether you are following all the four, that is solar, bio, wheeling, sensor, LED, etc. So your answers will be either 4 or all of the above, 3 of them, 2 of them, or 1 of them. So you have to take this, because it is mentioned that you have to take this. And again, what I'm talking about also carries 5 marks. So the more efficient system you build, the more marks are there. So here there is a standard operating procedure and the documentation that you have to mention, like if the solar plant is installed in your institution, so you have to take a picture, which is a geotag picture with the caption. It's not only the picture. So when you're clicking a picture, you have to mention the caption along with the geotag picture, that this is our geothermal plant, this is our bio plant, this is a biogas plant, wherein the canteen waste is put into it, and we make the energy out of it, and which is and because of the solar energy, because of the bio plant, or any of the electricity conservation system which you have put in your place, how much you are saving the energy. Just see the point what I'm trying to talk. It is not only the number. So you have to also mention in your qualitative reports relating to this, that the college is having, once you're writing a write-up about it, you have to also mention, because when you talk about the institutional values and the best practices, you can mention that college has the energy efficient system or power saving system, because of which 40% of the electricity bill is reduced, because the energy is supplied from the solar plants, from the bio plant, from the geothermal plant, etc., whatever you have made in your institution. So the nuance is what? The center point is that after the installation of those kind of systems, the energy efficiency systems, how much the college is gaining, how much energy you are able to save. That is the nuance of having the sustainable footprints in your college. This was the total requirement of the college before the installation of the plant, and after the installation of the plant and the alternative sources, we are able to save the energy. So that means you are addressing the sustainability issues. That is the main nuance. So in the standard operating procedures, you have to mention about the geotag pictures with the caption, and if you have taken the permission of wheeling of the grid, then what kind of a government document is there, you have to mention that as a proof. Then the permission document connect the grid from the government electricity authority of India. Then about if you have a generator, generator will not be taken. ये बहुत सारे institutions सोचते हैं कि हमने generators install कर लिए हैं और जैसे ही लाइट जाएगी हम लोग generator on कर लेंगे, इसके कोई भी नंबर नहीं है, बल्कि आपके नंबर कट जाते हैं. So if you think that the generator is there in the organization, and the organization can show it as a facility, so I'm very sorry to say it is increasing the pollution levels. So we will not be counting any kind of a generator installed in the institution. So that has to be stopped. So the main question which is asked, that is what percentage of the consumption is met by this alternative sources of energy. So the electricity board bill has to be produced. The permission letter of the grid has to be again produced. And if you are into some windmills or geothermal plants, then the proofs of that. So this was all you have to do in 7.1.2. So now moving on to 7.1.3. So 7.1.3, again, it is a qualitative matrix, and the total weightage is 4 marks. So in this, what is asked? Let me just give you the detail of this. Describe the facilities in the institutions for the management of the following types of degradable and non-degradable waste. So here the institution has to manage the report in 500 words, and the solid waste management policy, the liquid waste management policy, the biomedical waste policy,
then e-waste management policy, the waste recycling system, if you have any, the hazardous chemicals, if you're using in your science labs, how are you treating those labs, those particular issues. So the institution has to build all these policies together, and the total marks which you're going to get is 4 marks in this case. How are you dealing with the wastewater? Like in the washrooms, the water is recycled, and that water is used for gardening, etc. So that kind of a system you have to make. How you're treating your canteen waste, your hostel waste, biodegradable and non-biodegradable. So probably in your campus, you should have two kind of bins. One is the dry and one is the liquid. So that kind of a separation is very good. And how are you treating that liquid waste, anything which is liquid, and how are you treating with the solid waste management? So are you making a composting plant, or do you have any composting plant wherein all the the waste material is put and it is converted into compost? So the composting plant, solid waste management, liquid waste management. If you're dealing with your chemicals, then about the what kind of hazardous chemical, radioactive waste material you are following, and e-waste kaisa aapka hota hai. E-waste is very important these days because the number of gadgets, the technology is changing with the blink of an eye. So, you keep changing your gadgets. So after 1 year, I think this is the probable life of an equipment, that after 1 year, you would like to change everything. So how are you doing with the e-waste management? So if you do not have the policies in place, please make the policies of each one of them and show it in a report in 500 words that this is how you are moving on. So now moving on to 7.1.3, which is again a qualitative metrics. And the weightage here is 6 marks. So this is how the organization is doing about the waste. That is the separation of waste, biodegradable and non-biodegradable. So the canteen and the hostel, they always and most of the time produce the biodegradable. So you have to show that how you are segregating the waste and how are you managing the waste. That is the solid waste management or biodegradable waste management policy. You have to make a policy in any case. So please do it and do it meticulously. There are different agencies who are doing it. So contact them, have an MOU with them, and on a very regular basis, do this and make the reports available for the NAC to be uploaded as a documentary evidence that you're actually doing, these kind of policies, and they are the policies in action. Then about, how the waste is collected, how the waste is produced, how it is collected, and how it is managed. So in these 3 paragraphs, in about 500 words, you have to mention the qualitative report, wherein how you're dealing with the non-biodegradable waste. Non-biodegradable waste, you're talking about the plastic, metals. So how are you doing it with the paper? So, I told you in the last class also, when we discussed that the institution should have the best policies for the paper also. There is a NGO called Jagriti Foundation, and there are n number of such organizations wherein you can have a tie-up. You can collect the waste paper and get it exchanged by the RIMS, which is a recycled paper. So that shows your eco vision of the college. That is how sensitive you are towards the environment and what specific practices are in place for that particular reason. So you have to mention about how are you dealing with the plastic. Similarly, for the pollution control board, we have the plastic tie-ups also. So you can ask your the teachers to get 10 kg waste plastic, and you can award them also by IPC, Indian Pollution Control Board. You can have a tie-up with them, and in exchange there are some NGOs which takes the waste plastic and gives you the tables, the chairs, the racks, and stools, which can be used in your higher education institute. So it will not only make your vision eco-centric, but it can also come in a best practice that on a monthly basis or on a bi-monthly basis, there's a notification issued by the higher education institutes wherein you can collect the plastic and can be replaced. Similarly, plastic, paper. So simultaneously, you can have these kind of activities together. So e-waste also.
So then you can give it to the required institutions with which you have an MOU, and how the waste will be collected, whether it is a plastic waste, e-waste, biodegradable waste, and how the institution is moving towards as far as the sustainable waste management practices are concerned. And especially I will be talking about some very hazardous chemicals which the institutions are using because of their science labs. So they are radioactive, etc. So you have to make sure as a higher education institutes that they're, they're very actually bad for the health. So how the institution is dealing with the radioactive, whether, proper mechanism is there or not, because you have to always equip your students with the how they can use the chemicals. But after the experiments, whether their waste is taken care of in a very adequate manner or not. So otherwise, all these things, if the organization is not doing, they are actually increasing the waste. They will only show that they are very insensitive towards the environment, and this NAC will not, will not even see this. NAC always wants to see the sustainable and the eco vision of the institutions. By all these practices and by all these, policies in place, the organization can show the rise in the sustainable footprints, the decrease in the pollution, and all these things will actually matter a lot for the organizations. Now moving on to 7.1.3, that is the e-waste. There are so much of, so many equipments which the organization uses, like computers, etc. So how the e-waste is generated, how it is sorted, how they are being repaired, where they are being disposed of, what is the policy that after 5 years we dispose of. So, I mean, you have to mention about the period also. So the periodicity has to be taken care of. That is how it is to be recycled. So, so all these things you have to mention about the geotag pictures. If you are, asking some NGO to come and collect, so you can do a videography. So you can put some links of those videographies. Plus you can have produce some bills and, any proof which the NAC can, you can show, because any event which is live on a Facebook, the link of which you can show it as a proof also. So the NAC will allow a geotag picture, videos, bills as proofs that you're actually having a very important eco vision for the institution. So next is your 7.1.4. Here you have to write about the water conservation facilities which are available in the institution. So every organization should conserve the water, because it is going to be very scarce in the coming future. So the rainwater harvesting, the bore well, open will recharge, construction of the tanks and the bunds, the waste water recycling, maintenance of the water bodies, and the distribution system in the campus. That is, if you see, there is a potable water system, because your gardens and small gardens are there in the campus. So how you're going to port the water? So there should be big pipes and a system of sprinkling water. So the potable water system also carries a very important meaning in this 7.1.4. So how, you construct the tanks and how you conserve the water, rainwater harvesting. So all these things are a part of it. So if you're having all these facilities in your campus, that is the rainwater harvesting, bore well, the construction of the tanks and the bunds, water waste, recycling, maintenance of the water bodies, and the distribution system, which is portable. So your answers will be 4 and all of the above, 3 and 3 of the above, 2 of the above, 1 of the above, or none of them. So your answer has to be in this. So then the standard operating procedure, that is the evidence which you have to do here, is a geotag picture with the caption, the bills of the purchased equipment, the green audit has to be done in this case, the water consumption by a recognized bodies, because if you just Google, you will have the people who can do a water audit for you also. So audits and audits and audits are a part of the criteria 7. And how would you substantiate that what you're claiming is good? It is only, the answers can be given only by the particular audit, the energy audit, water audit, the green audit, the e-waste audit.
So the quality audits, all these things have to be in place, and it is very good for the institutions because you're moving towards the higher grading. So if you are having this kind of a portable facility of the water maintenance, distribution, water audit in place, so of course, then it is very good for the institutions, especially when you talk about the colleges which are in the hilly areas. So what you can do is you can make collect the water from the rain, create a pond, conservation policy, and you can also develop an ecosystem, which is commendable, taken as commendable effort by the NAC for the higher education institutes. So water audit, please, all of you make it functional. Rainwater, that is in your area, how much rainfall is there, how much you are conserving the water, what kind of water assessment is there. So all these things have to be in place. So all these things have to be in place. So green audit, water audit, energy audit, gender audit, conservation audit, all these things, please make the specific MOUs with the required bodies. And if you want, I will just send you the list of these bodies, and then you can have a tie-up with them, because they all have to be government recognized. You cannot be doing it with anyone. So now coming on to 7.1.5, that is the Green Campus Initiatives. So this is again a quantitative metrics wherein you have to mention the number, and the marks assigned are 4. Just 4 marks, but for these 4 marks, you have to actually substantially do a lot of effort. So what kind of green practices are in place? That is the institutional initiatives for greening of campus. That is how, what efforts the institution is playing to make your campus green. Like you have to restrict the entry of automobiles in your campus. So make a policy document that we will not allow more and more vehicles to come inside the campus. It is going to reduce the carbon footprints, and there is a measurement of air quality index in the campus. So you can get it installed. The less vehicles which are coming, the less pollution, you can show in your campus that your campus is pollution free. Some air purifiers can be placed in the campus, which is very good. Air purifiers are there in the campus. So you can get a very huge discount for the institutional air purifiers to be installed in your campus, which shows that you're very sensitive about the greening of the campus. More and more decent plantation, green trees, beautiful roses, flowers. It will not only beautify the landscape of the campus, but it is very good for your health also, because they emit oxygen, which is very good for all of us. And not only this, you can, I will just give you a very good and a very new example. Like the Delhi government on the bus stops, you must have seen that there are cycles which are put. So you have to top up your card, insert the card, you are able to take out the cycle and just move around in the local vicinity and park it into the next bus stand. And how much you're using or the number of kilometers, it will automatically be stored in the card. On the similar ground, if your campus is huge and big, and especially talking about the big universities, big campus, so you can have this kind of the green initiatives, which are battery operated vehicles, functional in your institution. So if the students have to move and they cannot walk, and because of some disability, also because of other reasons, also you don't feel like walking, so there should be a shuttle service which is battery operated within the campus. So that is also considered as one of the prime step to make your campus green. So battery operated vehicles, restricted entry of the automobiles in the campus, then pedestrian friendly pathways wherein the arrows and with very beautiful signage is there. So it is also going to make your campus beautiful, and ban on the use of the plastic. Everywhere you can have some good posters involved with the plastic and putting a sign untick. Tick is like a right and untick is a cross.
So you can have, because all these things, like after we can see the Modi ji's initiative of Swachh Bharat. So initially we used to just roll down the glasses of and the window pans of our cars and used to throw the litter outside. So now people, if they try also, there is some thought process which comes in their mind that no, this is not a good thing, and let us not pollute the environment. Let us not spill the litter everywhere in the Mother Earth. We have to make cleanliness as a part of our value system. So all these activities, these kind of slogans, posters, if they are installed in the institution saying that say no to plastic, or even if in the canteens and the hostels, if you do not get any even the packaging in the plastic, or if they are using a biodegradable material, it is good. So you can whosoever comes to your office for say tendering of the canteen or the mess facility in your institution, just take it them in the writing, and it should reflect in your documentation that whosoever gets the tender of the canteen. So there is a clear-cut guidelines that you cannot use plastic in our campus. It's a plastic-free campus. For this, you must apply for some awards also. So no plastic award. It means a lot by the Pollution Control Board of India, etc. And you must make your institution visible on the social media that all these activities are done by your institution. Then the landscaping of the trees, plants, not using of the plastics, then green pathways for the pedestrians, battery operated vehicles functional in your campus, restricting of the entry of the outside vehicles in your campus can actually be considered for this quantitative metrics, which carries 4 marks. So you can write about your following, or so you can all and 4 of it, 3 of them if you're offering, so you can take 3, 2 of them if you're offering, you can take the 2, and if you're not offering any of this, then you have to, because you have to substantiate with the proofs. So the posters, the decent plantation, the green initiatives, what you're taking. So it has to be supported by the policy documents, the geotag pictures with the captions, and the implementation with the supporting documents that you are following this can actually give you some good mileage as far as the green initiatives are concerned. Then Kindly unmute yourself. hello, am I audible now? Yes, ma'am, you are audible. Okay. So now coming on to 7.1.6, that is the quality audits on the environment and the energy. So your institution should be ISO certified, ISO 9000, 2015, and ISO 45000, 2018. So you have certified auditors, you can call them, or the Quality Council of India. You can write to them that we want to get our quality audits done. So the outcomes of these kind of audits will be compliance and a non-compliance. So conformity and non-conformity, they are not the negative way of life, they are the positive ways of life, because conformity with some reforms and some suggestions will be given by the lead auditors, and which is very good for the institutions for your specific functioning of the higher education institutes. So what you have to do is you have to make a policy documents for the green. You have to get a certificate from the auditing agency, then certificates of awards if you have received for a green campus, and for the environment, sustainability, for any beautiful thing which you are starting in your campus, you must show here in this particular criteria. The plantation drives outside the campus also, like Ganga cleaning and plantation drives near the slum areas. So if you're doing some good environmental promotional activities outside the campus also, then please show it here also, because it is like if your newspaper
publishing are there, because it is being caught by the media also. So if you have any published newspaper clippings, that can also be taken as the evidence and the supporting document for this particular matrix. So now coming on to 7.1.7, that is the institution has disability friendly and a barrier free environment. So for this, you can go in for a disability audit. That is the, you can build the ramps in your institution, disability friendly washrooms, and signage of the tactical path for the blind. They understand a braille language, screen reading softwares, light display boards, and the signpost, assistance, assistance technology for the disabled people, facilities for the persons with a disability, that is Divyang people, accessibility, websites, especially for them, and the screen reading softwares. They should be there. These are the disability indicators which are specifically mentioned, and it's an interim audit. It's an interim thing which has been announced by NAC, that every institution must have these disability indicators and will be given a good mileage in this regard. So you have to provide, when you visit a campus, if you have just one particular room, say the reception or any of the inquiry room or C, so it is going to make your campus barrier free. Whatever information anybody wants is available on that particular desk. So every organization must have that information desk. We can say the provision for inquiry and information, that is for the human assistance. So अगर आपका ऐसा कोई भी इंस्टॉल नहीं है, तो प्लीज आप एक रिसेप्शन या कुछ ऐसा एक इंस्टॉल करिए जो पूरा वेल इक्विप्ड हो. You can also have the robotic display systems, where in every screen you will have the helpline numbers, the direction, the movie which is screened in a loop. After the movie is over, again the movie will be displayed. You can have a self-directed, self-automated system which is robotic in place also. You can always have a digital information board also. But since we have the limited infrastructure, so you should always have one particular room, which we call it as a provision for inquiry and information for all kind of a human assistance, reader, soft copies of the reading material, some kind of information, booklets, etc. So all these things will definitely matter a lot. Again, for the people with disabilities, you should have lifts, you should have ramps, and you should have particular softwares installed in your organization, especially in the library. And you should have a disability staff room also, wherein the people who are Divyang can have all the facilities and the things which are very, very important for the organization. Then we have the description 7.1.8, which carries 5 marks, which is again a qualitative index, a qualitative matrix. Here you have to describe the institutional efforts and the initiatives in providing an inclusive environment that is tolerance and harmony towards the cultural, linguistic, communal, eco, socioeconomic and other diversities. You have to write here, like you can have Ek Bharat, Shresht Bharat celebrations for Northeast. You can always celebrate Bengali Day, Punjabi Day, anything of this sort. So which shows the respect of the different communal, cultural, linguistic. So you can design these programs in your own particular way. And you have to respect the diversities in the campus. So every college is diverse in its own way. Then how you are tackling with the diversity, how you are trying to project that your organization is an inclusive organization who respects diversity, etc. So please mention in about 500 words a report that what activities do you do to make your campus more inclusive and respecting the diversity. Then moving on to 7.1.9, that is the sensitization of the students and the employees of the institution to the constitutional obligations, that is the rights, the duties, responsibilities of the citizen. So I think you can always talk about these sensitization programs wherein you can organize some debates,
some slogan writing competitions, etc. So this is actually going to make this particular criteria very good. So you can mention in 7.1.9 how you are sensitizing your students and the employees. Then we have 7.1.9, that is a qualitative matrix for 500 words. The different activities, how you sensitize people, the value systems, the responsibilities, the roles, whether you are organizing some essay writing competition, debate competition, speaking against the motion or speaking for the motion, etc. Now, coming on to 7.1.2, that is the quantitative periodic conduct. So the institution has a prescribed code of conduct for the students, for the teachers, for the administrators. So what is the responsibility of the institution? To send it across, to discuss your code of conduct, and it should be displayed on the website of the college. And there has to be a committee to monitor that there is no conflict of code of conduct and everyone is following. So the compliance and the monitoring committee should be in place. And if you are, you can always have some online awareness program of the code of conduct, that what are we supposed to do as teachers? What are we supposed to do as students? What are we supposed to do as a non-teaching staff? So the professional code of conduct, the constitutional proceedings, the document showing the conduct, the handbook, the manuals. So what you can do is you can always have some policy documents in this regard, which can be distributed to the teachers as well as to the students. It is actually going to make your inclusive campus, beautiful campus, which is hassle-free, and of course, overall the institution is following the code of conduct. So now moving on to 7.1.11, that is 11. That is the institution celebrates and organizes the national and international commemorative days, events, and the festivals. So the weightage is for 5 marks. So you have to mention and provide the links, evaluate the events for last 5 years. The geotag photos and the relevant pictures all have to be shown here, that you are following all the national festivals, international, commemorate days, events, and the festivals in your organization. Like you're celebrating Independence Day, you're celebrating Republic Day. All the important events are being followed, which are of national and international importance in the higher education institutes, because we are like the International Youth Day is there and all that. So this is really going to make your children and your students and faculty members more equipped with the days which are of national and international importance. So this comes under 7.1.11, which carries 5 marks. So you have to make a list of such programs last 5 years that you have been doing this, and how many student participation was there, and the annual reports of the celebration of such events should be given as a supporting document. So now moving on to 7.2.1, that is the key indicator for the best practices. Now let me tell you what the best practices are about. See, you cannot call any practice a good practice unless and until it is portraying something very important, and unless and until it is showing some, the importance as far as the value system is concerned, as far as the any activity which is being reviewed, which is being done at a sustenance level, will come as a best practice. So again, you have to give the supporting documents for this. So this 7.3.1, that is the institutional distinctiveness, is anything which portrays the importance of the institution in one area that is distinctive to its priority and the thrust within. For this, you have to provide the institutional website link and special distinctiveness about, which has been given the institution a very special and distinctive identity to the institution. That is, आपके कॉलेज में कोई भी एक ऐसी एक्टिविटी जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड अप कर रही है, आपकी एक आइडेंटिटी को बना रही है, so that part you have to mention here in 7.3.1. that is the key indicator for institutional distinctiveness.
So now I would like to tell you more on what are the specific best practices for the higher education institute, because this is a common question which people ask. So any practice is labeled as a best practice if it is delivered in high value impact on any dimension of the educational activity in an institution. For example, a best practice, and the excellent outcome of that best practice. For example, your institution is moving towards the research, more and more workshops on research. So outcome is beautiful, that people will start having more of analytical qualities, statistical qualities, econometric qualities. They will be good in report writing. So this will come under the best practice, that if the institution has a research building and such kind of workshops, which is the core practice of the institution, teaching at par excellence, using the digital pedagogies, using more of case studies, again the outcome is good, that the takeaways are good, and people are taking care of, as far as the students are concerned, their teaching learning is par excellence, because the faculty members are using the modern teaching pedagogies, use of Kahoot, use of gaming, so that the concepts are endorsed to the students in a very playway manner. So the best practices are very different from the standard practices. And, it may depends upon many variables, like if you continuously review your activities and improve your activities, it becomes a best practice. Your standard practice will be converted into a best practice if it is reviewed again and again and improved again and again. So research at one time is a standard practice because every institution does it. But if you are building it for the research acumen of the students and continuously doing it, a lot of faculty development programs, student development programs are in place, your research activity will be converted, which was a standard practice, into a best practice. So it depends upon your institutional goals. How are you moving about your global concerns for that? And your, if you are dividing the learners in the organization into a slow learner and a quick learner, and you are also devising a mechanism, like if you have some slow learners in your organization, so what kind of remedial classes you're providing, it becomes a best practice. If you have a quick learner in your organization, so just to boost and give a kickstart to that, what kind of specific initiatives the organization is taking for that particular quick learner. So that becomes a best practice. So you have to collate such practices for last 5 years and, give the selected good practices for the institution, etc. So I'll just give you a few more examples and I'm then going to end the session. Like if you are enhancing your electronic periodical publications, you are doing some good administrative practices, like the scholarship reports they are generating, the people with low income, they are just secluding the names so that they generate a list for those who require money. So techno-savvy infrastructure, if you are improving continuously for the college, or organizing the personality development workshops for the students as well as for the faculty members. Similarly, research forums are enhanced and given a start. Green and transformative, practices are there in the campus. And if you are involving the alumni in your teaching learning process, that is also a best practice, because what your alumni can give to the organization, you cannot even quantify them. So the more and more alumni involvement is there over a cup of coffee can actually make a substantial difference. So invite your alumni to a substantial extent. And if you're doing more of industry collaboration, that is also be called as a good, practice. So there are some good administrative good practices which can make your practices a good practice, like book bank statement, scholarship for needy, some kind of preparation of the list of the people who are for the competitive exams, some kind of, if you're more into doing of good programs like yoga, meditation, innovative methods, having some ethical value system programs, then about more and more programs on Bhagavad Gita, because it has the answers to your every question of life.
So, going back to roots, or your scriptures, your manuscripts, and your, if you have some every day, like you can have some discussion on Guru Granth Sahib, you can have some discussion on Bhagavad Gita, etc. So all these things, they are going to instill some value system for the organization. And you can have some national symposiums, workshops, seminars on these systems, or adoption of a village, free education. All these things will matter a lot, and is going to make your institution a catalyst for these kind of programs. So giving facilities, etc., they are all going to make your institution a good value system for the, and it's very meaningful for the society at large. So that's all from my side. So I open the dais for any questions if you have. Thank you so much, ma'am. I request the participants, they can put their questions in chat box, or they can unmute themselves and ask questions directly to ma'am. The dais is open for question answer session. Ma'am, most of the participants are saying that it was a very clear session. Lucid 2, wonderful session. Our chat box is full of these questions. Thank you so much, ma'am. And ma'am, I want to ask one question. Like you have said, institutional distinctiveness. So could you please explain more on it? Ma'am, you have to unmute yourself. See, the institutional distinctiveness means what? That you are doing something out of box, which builds your reputation, which puts your organization in at a very different forum. Like, for example, you are the only institution which is doing a very good work for the poor section of the society. You're not charging anything. You're doing something good for the society. There is distinctiveness can be any. It can be relating to your particular course which you are giving to the college. For the students, it can be relating to the upskilling of your students. It can be relating to any particular job, what you're doing for the society at large. So any distinctiveness, any good feature, which you think is an out of box activity, it is going to make your institution add value to it. So this is what is called as the institutional value. So what I feel is that you can cut across your routine work and make something which is very distinctive. Like every institution would like to be recognized for certain of its attributes, which makes it a distinct institution or one of its own kind. Such attributes characterize the institution and are reflected in all the activities in the focus and the practice. Like the institutional focus can be, for the marginalized section of the society. The institution focus can be for a woman empowerment. It could be for the transgender, anything. So just have a look on the different reports of the higher education institutions, because this is only one criteria and one metric. Right. So just try and have a look and how they are making their institution a very different organization. Like we are having a Hindustani music in our institution, and we are trying to make the international singers. So any of this it's up to you how you are going to project your institution for a particular attribute which is not there in the other institutes. So you can make it a distinctive practice. Anything. There is one more question, ma'am. Could you please suggest some good practices for sports and physical education? Physical education, like you can give a training school for them, which is free of cost, and which is like beyond your classroom. Like for example, your college starts from 8 o'clock till 3 o'clock. So after 3, you can have some free, training sessions for the football, or because not every game is there in all the colleges. There are few games in each college. So you can always do some out of box training program for such people and make them ready for some international, international programs, and they can participate as a team and give laurels to the institution. So
So this can be for the physical. Then you can have some free diet counseling for them, that how they can take care of themselves, some free medical checkups for them. And it has to be on a very persistence level, continuous level. Only then it will be called as a good practice. I told you that any standard practice can be converted into a good practice after the review and after the constant effort to make it better for the institution. So this can be really converted well. Thank you so much, ma'am. Ma'am, there is one more question. If we say innovative, it should be new and not the one, but we are doing in the previous year. And as we say, ma'am, best practices that we follow since many years. So she wants to ask perhaps that what should be the best practice? It should be innovative, new, or the one which we are following since many years. Yeah, see, if you have been following, you can improve your practice. It will be the best, but the way you are doing is new. So that becomes the best practice also and innovative also. आपका Right. तरीका वही है, पर आप उसको उस तरीके को आप डिजिटल तरीके से कर रहे हैं, उसका रीच बढ़ा रहे हैं, उसका डोमेन बढ़ा रहे हैं, उसको ब्रॉड कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस तो वही है. But the thing you are doing is very different now. So you can add some innovation in the way you are doing or giving the best practice. To the institutions. The way you are doing can be innovative. आप Thank समझे you so much, ma'am. प्रैक्टिस आपकी वही रहेगी, but काम करने का तरीका. Hello. Hanji ma'am, I have a question. Yes, please. Actually, not a question. Please provide us the list of bodies जो कि हमारे जैसे विमेन कॉलेज है उसमें हमारी हेल्प कर सकती हैं, लाइक वेस्ट पेपर मैनेजमेंट के लिए आपने बताया था, या फिर ई वेस्ट मैनेजमेंट के लिए. So what I'll do is I'll make a list for the relevant bodies by which you can go in for gender audit, quality audit, water audit, energy audit, and give it to the organizers. Then they can share it with the participants. Okay. Thank you. Thank you so much, That ma'am. will be the best. Thank you so much, ma'am. Ma'am, though there is one more question for gender sensitization, though we have done a full session yesterday. So she can mail you the question, and the rest of the questions we can mail you. So, ma'am, we are waiting for your concluding remarks, Principal ma'am. Yes, I was just listening. Namita has very well explained. Namita ji, one you were suggesting for the sports, we can say that some colleges are linked with the societies. They have their schools also. They can open an academy for that school children, or as the few facilities are not available there. So ma'am, we are very thankful to you for this deliberation, and hope you will remain connected with us, and the data which you will be giving us, we will be mailing them. For the participants, we want to inform you from tomorrow, there will be some morning session 10 to 12 for intellectual property right, academia, industry, innovative practices. Tomorrow till 30th, we will have morning sessions of 10 to 12. And in evening, we will have the sessions which I told you when we started the session. So thanks to Namita for delivering a beautiful lecture on this topic. Thank you so much, ma'am. Now I invite my worthy colleague, Mrs. Nishu Bansal, for a vote of thanks. A graceful and warm good evening to our chief guest, Dr. Namita Rajput, Madam Principal, Dr. Kiran Angra, and my dear participants. It is my proud privilege to have been asked to propose a vote of thanks on this occasion. I, on behalf of M.D.S.D Girls College and entire fraternity of the college, extend my most sincere thanks to Lord God. On my behalf, I extend a very hearty vote of thanks to our today's speaker, Dr. Namita, for making an excellent presentation and making this seminar a very meaningful and more interesting. Ma'am has very well explained about gender equity, e-waste management, and she has explained about criteria 7, each and every parameter.
Thank you, ma'am. It is an eye-opening session for all of us. I would like to express my deep gratitude to our principal, Dr. Kiran Angra, Assessment and Accreditation Ambassador, for her guidance and moral support. Thank you, ma'am. My sincere thanks to our IQAC coordinator, Dr. Anuradha, and IQAC team for their hard work and dedication. And at last, my special thanks to all the participants whose sincere and active participation has made this program more lively. Thank you very much. Over to you, Anuradha. Thank you so much, ma'am. One more information for all the participants that this FTP will be for 6 days till 30th at the same time and with the same link. And I have shared feedback link for day 1. Every day new link will be shared for feedback, and at the last day attendance will be accumulated and the certificates will be made accordingly. So I request all of you to join this and fill the feedback link daily. Thank you so much, ma'am. Just repeat, Anuradha, that in the morning there will be now sessions from tomorrow. Yes, ma'am. Also. Yes, ma'am. There will be sessions from in morning, and daily we are organizing webinar on different topics of IPR and academia industry initiatives and best practices in that form. And the same link I will share in all the groups. You can join that too. And feedback link which will be shared in the morning, that will be different for every day, and daily you will get certificate for webinars. So tomorrow you can join us at 9:50. The ones who have filled feedback form, they can leave the meeting. Shall we end the meeting, ma'am? Yeah, sure. Okay, ma'am. Thanks to all.